ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today is day 20, Manmanabhav, to use in a worthwhile way. Avyakta signals to imbibe the qualities of sweetness and humility. To the extent that you have self-respect, to that extent you also have humility. Do not have arrogance of your self-respect. Let it not be, I have become elevated and the others are still juniors. Let there not be feelings of dislike for them. It should not be like that. No matter what souls are like, look at them with a vision of mercy, not with a vision of arrogance. No arrogance nor insult. This is not the way of Brahmin life. A Brahmin means to always be humble and remain busy in the task of renewal. Now we will listen to Mohini Didi. ओम शांति सभी को ओम शांति Om Shanti to all of you. अगर हम एक एक को लें तो एक एक शब्द में कितनी गहराई है If we take one word, every word has so much depth. And when we practice that, then we know जैसे कई बार होता है then we know थोड़ा सा भी it. Sometimes it इस बात का happens अपमान महसूस होता है when we feel insult in थोड़ा something, कोई but कुछ कह if रहा someone है is saying मुझे some क्या to है us and we इसका feel it, मतलब अभिमान it है means that we have और arrogance. सम्मान और अभिमान का बहुत सूक्ष्म में अंतर There है is subtle बाबा जो meaning, कहता है ना subtle difference जैसे between है self and बन arrogance. रहे हो Baba says बाबा that की you तरफ are बहुत becoming बहुत बाबा elevated. इतनी You are अच्छी very अच्छी close to बातें Baba. सिखाते Baba कहते says so हैं many good things to us. तो हमें सम्मान तो रहता ही है So we परंतु keep that अभिमान self-respect with us, कभी कभी but sometimes arrogance also gets mixed with it. हमारी दादी जान की हमेशा And कहती Dadi थी Janki always used to कदम say आगे बढ़ो that you take तो one स्वागत step कैसा forward, होता है वेलकम करने you take one step कहते forward and तुमने you बहुत see अच्छा किया that तो the बहुत arrogance is standing right there, that you did very well, you are very ये हमारा special. पार्ट है उसमें So सम्मान हो whatever part we have to कभी have that सम्मान होगा तभी तो self-respect, सेवा कर सकते because हैं only when we have self-respect we can serve. लेकिन अभिमान ना हो But there should not be अभिमान any होगा तो छोटी arrogance, छोटी बात पे because if कोई arrogance, मेरी इंसल्ट कर दे then little इसने things ये will क्यों कह दिया make us feel इसका that व्यर्थ they are संदेह insulting us. Why did he or she say to me लेकिन जो that सम्मान thing? वाला So है there will be many ways वो thoughts, मुस्कुराता but रहेगा one who has who is in इसने ऐसा self-respect किया या will नहीं always be smiling. Even if जो भी someone says शांतवाणी something, शक्ति प्रेम और still दया की भावना that होगी soul will उसे have ऐसा नहीं लगेगा love कि and मुझे towards that soul. It will not be like, why this फिर soul बाबा did कहते this हैं to कि me. हाँ, Then Baba जो says निर्माण होगा वो निर्माण के काम में व्यस्त रहेगा that those who are humble will be busy in the बिगड़ी task हुई of बातों को renewal. लाना होता है कभी छोटी छोटी बात पे कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है Sometimes it बात happens को ठीक करना बढ़ाना that there are misunderstandings, but to make इस that बात का thing मतलब ये नहीं straight, है कि that is to कंस्ट्रक्टिव construct, विस्तार में नहीं जाना not to go into expansion. ऐसे शब्द बोल दो ऐसी दृष्टि Say रखो कि वे विस्तार words बन जाए or keep that kind of बाबा जी drishti जैसे that कहते हैं ना whatever बिगड़ी has हुई been बनाने वाला spoiled becomes right. Baba always says Baba is the और one who निर्माण के कारण makes बनता है everything right. सुधार Whatever has been करना है तो spoiled, he makes everything right. को बनाना है हमको
So when we are in this task of renewal, construction, then we have to make everything right. And we have to make everything elevated. We should not see whoever is to be blamed, or this person did that, not to go into that expansion. So first keep, first make the things right, but and then later, if it is needed to know, then maybe later you can ask about it, but not to go into expansion. So we did the work of the donor, being a donor. So along with being a donor, we have to use in a worthwhile way. People, many think that to donor means to give. जैसे बाबा ने कहा कि बाबा का एक टाइटल है Like Baba दुख से says, सुख करता। Baba's title is अभी that he is the दुख remover हमें of होता sorrow and है, bestower of happiness. सुख देने का स्वभाव होता है। So the nature is to और किसी give से कहीं ना happiness. कहीं कोई बात निकालेंगे जरूर, And sometimes उसमें से सुख में किसी को people दुख will पहुंचता है। take out few things that will cause them sorrow. अब सारा हमारे सोच के ऊपर है। So it all depends upon our thoughts. मैं खुद भी सुखी रहूं, So बाकी सभी सुखी रहें, I should be happy and others should also be happy. That should be our thought. And if we have this thought, सबसे बड़ा दाता है गुणों का दाता। then the one, जहाँ कोई बात the करे, most कोई उत्तेजित करे, elevated donation is the मेरी समझ donation में of हमारे दुनिया में virtues. So if someone becomes impatient, और ज्यादा then देर हो जाए नहीं, what do we have अभी to समय कम do है, in such occasions? अपने At आप that को time, our शांत work is to, स्थिर our रखें। task is to be very patient, to be cool, to be peaceful. कोई बात है जिसमें हम If कोई there शक is कर रहे हैं, संशय ला there रहे is a हैं, situation and we are creating a doubt अपने about it, सत्य का दान दो। and something a doubt, then at that moment give the हमेशा donation of faith, और ऐसा लगेगा and कि then हम you will be सफल कर very, रहे हैं, you will किसी get और this को भी सफल कर रहे हैं। this feeling that I कई am हमेशा सोचते हैं I सबको am सफल करना using my है, virtue in a worthwhile way. धन सफल करना है, So you धन say that सफल we have करना है, to use our time, our दोनों wealth को भी सफल in a करना है, worthwhile way, और सफल करने के time, लिए body, wealth in a worthwhile way. But at the same time, we have to use the भी सफल virtues as करने well in a worthwhile worthwhile way. way में यूज करो हर एक चीज We को। have to use everything in a तो worthwhile क्या way. होता है कि अगर हम दाता बनकर So सफल होते हैं तो if थोड़े we वक्त में use everything in a बरकत worthwhile आ way, जाती है। being a donor, then even little कभी कभी things, होता in है little things we can save a ब्रह्म lot. भोजन होता है, भोग होता है, Like Brahma Bhojan, Bhog, गुरुवार का भोग होता है, Thursday's Bhog. तो दिन भर कोई ना कोई आ जाता है। Throughout the day, some or the other तो जब soul will आते keep हैं coming. तो भोग So when they खिलाते हैं come, उनको, we feed तो them शाम में bhog. कैसा लगता है कि So आज मैं सफल होता रहा। by तो evening, के thing comes that न we केवल भावना have been using शरीर में उनके बाबा का everything in a प्रभाव worthwhile way. इतनी उनको एनर्जी मिलती Those है। who ate that जब Brahma सच्चा संकल्प होगा ना they तो get so बाबा much भी आपके energy लिए from that सफल होंगे। bhog. So if you have मैं तो this देखती हूँ छोटे thing in छोटे your mind बच्चे that I have आने to पर use किसी न किसी it in a सोच में worthwhile way, then जुड़ जाती है। everything you're able to use in a तो बाबा worthwhile way. कहता है संकल्प So Baba समाधि says that you have to use your तन thoughts, मन धन सब कुछ सफल करो। your तो breath, सफल करने से यहाँ your पर भी body, your अलग wealth, फल मिलेगा, इन्हीं your सत्य में mind, मिलेगा। everything in a worthwhile way. And when you use ये तो everything in a जरूरी नहीं worthwhile way होता कि here, then धन आपके पास ज्यादा आता जाए, you परंतु don't even ये have to wait till the golden ईश्वर age. बरकत है। You get everything right here. कैसा भी तन है पर सेवा हो रही है, Whatever body you have, तो यहाँ you पर भी use it in a worthwhile जो way. सफल करता है उसको प्रत्यक्ष मिल जाता है। So if you use everything in a worthwhile way, then you वैसा get the फल fruit और सफल करना instantly. So दोनों अगर being मिलके a काम कर donor
So both being a donor and also using everything in a worthwhile way, if you use both the things, then you will yourself feel very good. अगर हम ये सोचे चलो रख दो पर हम कहते हैं चलो सफल करो ढंग So से if करो we राइट टाइम so if we use everything way in right purpose, the wealth and everything, then it gets multiplied and then you get it right here. This is what the experience says. So our homework is very good. आप सोचिए इतने हम So बाबा के बड़े विश्व में हैं we, Baba's children, are across the whole world, and we all are donors. And if we all use everything in a worthwhile way, then the whole world will get the benefit. सभी आत्माओं को कुछ न कुछ The souls चाहे परिचय in the मिले world कुछ न कुछ प्राप्ति will जरूर get something or the other, हम सब ऐसी maybe भावना Baba's अपने अंदर introduction or whatever, everyone will get something. So we should keep this bhavna, the feeling within us. दाता है एक बाबा है So we will also remember the one Baba हमें who is दाता the भी है bestower. सफल So we करता है keep this in our mind that we are bestowers and we have to use it in a worthwhile way. Then we will become Manmanabhav. We start in Baba's remembrance. We perform every task in Baba's remembrance. Then we can stabilize ourselves in the stage of Manmanabhav. मन मना भव सफल करो Manmanabhav, बाप दादा use in a worthwhile way. हे बाप Bap दादा Dada ले repeatedly लो tells सवारे you, बच्चे O beloved अपने children of अंधेरे Bap को Dada, समाप्त करो children who live सफल in my करो heart, संगीत now का समय finish है your समय account की of बात waste. नहीं है Use everything in a worthwhile way. You must देखो not जो waste योगा even a आधारित है second of the मन conference वो age. करते हो Look, when you have और yoga, आधार you है say Man ईश्वर Mana Bhava. And this is the basis of your समय की foundation. रफ्तार So सारखी check है everything. चलते Was फिरते the value of कोई time संबंध throughout the है day while moving अपने रूप along, से रहा है performing हर actions, सेकंड and coming into हर relationships with सेकंड others सफल करो used in an ओम invaluable way? शांति Every second and every thought has to be used in a worthwhile way. Om Shanti.